कि लोगों को ना पैसों के बारे में जानकारी बहुत कम है। वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली मेक अ लिविंग आउट ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन। कि व्हाई दे आर डूइंग समथिंग, क्या वो पैशन के लिए है या वो एक्चुअली पैसे कमाने, यू नो, देयर इज गोना बी नो मोर सुपरस्टार्स। Welcome, Sanil. Welcome to the show. Thank you so much. Thank you. So, Sanil, you are working with Radio City 91.1 since 2009 as a radio jockey. So, how did you choose this particular field as a career? Radio with this station has been 13 years, but I actually started private FM radio in India. That was 22 years ago. So it started back in 2002. That time they were looking to go private, and I was in Delhi. I was doing economics honors. I finished my college. I was going to London School of Economics. We were going for the entrance exams and all, and then I realized that कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं आना है क्योंकि पढ़ाई नहीं करनी मुझे इतनी, और because economics honors ने वैसे ही बहुत चूज किया था, you know, it was too much. उसके बाद obviously the normal career would have been an MBA, और MBA के बाद फिर जो भी करना है वो करो. ये क्या हुआ कि एक ऑडिशन हुआ by mistake. मैं दिल्ली में निरुलाज में था. दिस इज अ वेरी फेमस प्लेस इन प्रिया सिनेमा. वहां पे कैसे चल रहा था, माय फ्रेंड वाज देयर हु वाज ऑडिशनिंग एंड ही सेड यार तू भी कर ले, और फिर ऐसा हुआ कि हम दोनों ही सिलेक्ट हो गए. और ये एक महीने बाद फिर मिस्टर परेगी जो पेनिटन कोलमन के बॉस थे, ही सेड कि कैन यू कम टू बॉम्बे, एंड आई सेड ओके, let's see. And that's how I came to Bombay, and from Radio Mirchi ke saath shuruaat hui meri. And yeah, that's how radio started. And then for a short while I did radio, then I did television and film for a long time, and then I came back to radio in 2009. That's great. Like, it's rightly said कि unexpected things बिल्कुल बेस्ट होती है. जरूरी नहीं हाँ बिल्कुल, मतलब जो बस प्लान हो. नहीं, उस समय प्लान किसी का नहीं था ये का, बिकॉज 2002 में इस लाइन में कभी कोई पैसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा पैसा आने लगा था 3 or 4 years later, and that's why people started to come in, and then now everybody wants to join this kind of line. I was a very good student, I was a topper, and उसके बाद so anybody who does economics honors anyway, you have to understand, you have to have minimum 85-90%, nothing less than that. तो उसको ये करने के बाद आप फिर अगर यहाँ पे आ रहे हो तो लोग ये सवाल करते थे कि why, और even in school, college, दिल्ली यूनिवर्सिटी में there were a lot of questions there, लेकिन फिर वो like this से कि एक बार स्टार्ट हो गया तो सब स्टार्ट ही हो गया. Wow, interesting. That was really inspiring. So, like, your show Currency on the channel is one of the most popular shows around the world. So, can you tell us more about it? Correct Currency is a podcast. So my radio show is popular in Bombay and all that, but I do lots of podcasts also. So one of the podcasts is Correct Currency, which is a financial podcast. So I do a financial podcast which had never been done on radio. I started about 3-4 years back. क्या है कि लोगों को ना पैसों के बारे में जानकारी बहुत कम है, and they don't really know how to do things. I've also been a stockbroker. So in my life, apart from radio, film, TV, I've also done lots of investing. Because of that, कि उसकी जानकारी अच्छी थी. So I started to educate people on radio about 2.5-3 years ago through this podcast. और अनिल सिंह भी, मैनेजिंग एडिटर ऑफ जी बिजनेस, मेरे अच्छे दोस्त बन गए, और हम दोनों इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, टॉक अबाउट इट, एंड इट एक्चुअली आई थिंक गेन मोमेंटम, क्योंकि फिर वो कोरोना वायरस आया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, लेकिन उस समय भी हम लोग काफी गाइडेंस दे रहे थे लोगों को. और फिर 2 साल मार्केट जब बूम हुआ तो बहुत सारे लोगों ने हमें सुनना शुरू कर दिया, एंड देन वी वन लॉट्स ऑफ अवार्ड्स. तो ये ऐसे ही होता है, अभी मार्केट बहुत गिरा हुआ है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, सो नाउ आल्सो दे आर फॉलोइंग अस नाउ, बिकॉज़ अब क्या करना है, इस गिरे हुए मार्केट में क्या करना है, इट्स ऑलवेज, एंड आई हैव ऑलवेज एंजॉयड मनी, सो एज अ रिजल्ट ये पॉडकास्ट वाज अ वेरी नेचुरल एक्सटेंशन. तो करेक्ट करेंसी चल गया, एंड या पीपल लाइक इट. Wow, like you are the jack of all trades and master of everything. That's super. नहीं, मास्टर ऑफ एवरीथिंग तो बिल्कुल नहीं है, बट सी व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज, लोगों को समझ में नहीं आता है करना क्या है हमारी इस लाइफ में. तो बिकॉज वी डिस्कवर्ड एवरीथिंग ऑन आवर ओन फ्रॉम द फर्स्ट ना, हम लोग पहले थे जो आए 20-22 साल पहले, मतलब लिटरली बिफोर अस वाज ओनली मिस्टर बच्चन हु हैड कम टू टेलीविजन एंड मेड बिग मनी इन टेलीविजन. तो उनकी वजह से हम सब आए फिर टेलीविजन में, और उनकी वजह से व्हेन एकता कपूर ने सारे सीरियल्स बनाना शुरू किया, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज टेलीविजन, एंड देन ऑल मीडिया स्टार्टेड टू मेक मनी, चाहे वो रेडियो था, और पॉडकास्ट भी अब 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था जब स्पॉटिफाई के साथ मेरा पहला पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ. सो ये भी 3 साल हुए. दिस इज आल्सो वेरी न्यू फॉर एवरीवन. अब क्या हो गया, एवरीवन कैन मेक अ पॉडकास्ट, यू नो, सो दे ऑल मेकिंग पॉडकास्ट, पुटिंग इट आउट देयर, बिकॉज़ दे गॉट एंकर, दे गॉट वेरियस मीडियम्स, बट पीपल स्टिल डोंट नो हाउ टू मेक मनी. So we were lucky because we were sanctioned by all these companies to make the podcast. So first more advantage हमारा always रहा है. As a result of that, that's the only advantage I have, because I've been the first everywhere. So उसकी वजह से ही सिर्फ वो luck factor रह जाता है, because you are the first, तो तुम्हें सबसे पहले चीज ऑफर हो जाती है, तो बस. And आप लोगों की वजह से ही हमें और अपॉर्चुनिटी मिलती है ये सबसे ट्राई करने की. That's also the best part. हाँ, चीजें लोग बहुत ट्राई कर सकते हैं, बस लोगों को बस ये समझ में आना चाहिए कि आपके अगर 10 पॉडकास्ट है या 10 यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे लिविंग कमा सकते. वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली मेक अ लिविंग आउट ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन. नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप सिर्फ वो 50 लोग या 100 लोग जानते हो जो बहुत फेमस है, लेकिन आप वो 50,000 या 50 लाख लोगों को नहीं जानते हो जिन हर किसी को लगता है कि वो यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम. सो अंडरस्टैंड दिस दैट आई हैव जॉब्स, आई VJ for B4U 22 years now. I'm vice president of Radio City. I have a podcast on Spotify, and then I do all these things also. ये भी समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने आज बंद कर लिया, पॉडकास्ट बना लिया और वो चल जाएगा. ये नहीं है. कड़क करेंसी से हमें कोई पैसे नहीं मिलते, मतलब अब जब क्लाइंट्स आते हैं ऑब्वियसली पैसे मिलते हैं. मैंने उस मकसद से नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे को उससे कमाना नहीं. लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि why
दे आर डूइंग समथिंग, क्या वो पैशन के लिए है या वो एक्चुअली पैसे कमाने के लिए? सो पैसे कमाने के लिए यू हैव टू हैव सम क्रेडेंशियल। अब ऐसे सुबह उठ के बस मन कर लिया व्लॉग बनाने का और आगे ऐसा नहीं कर, ये बड़ा मुश्किल है। True, true. I absolutely agree with you. Like, you are multi-talented, you are an Indian actor, VJ, radio jockey, and television host. So, how do you keep the track of all these? Like, mainly, what advice would you like to give to the youth of today on maintaining a balance in life? You can't maintain a balance in life. There's nothing called a balance in life. If you want to succeed, you've got to work. I've been working 20 hours a day for 22 years. So when people see what all we've done, you know, जब Google पर दिखता है बहुत, wow, ये बहुत सारी चीजें हैं. There's nothing called a balance in life because you can never become super big if you want to. That is, you can do normal things in a job. आप job में आ गए, फिर आपकी वो 8-10 घंटे की job होती है, फिर आप उस हिसाब से अपनी expectations रखेंगे. But in the current world, you know, everybody wants a car very fast. You're looking at buying a house in Bombay 25 साल से पहले. Well, you may be able to buy all that, but who's going to pay the EMI? So if you start doing all that, then there's no way that you can just live a balanced life and say, I want to go for an international vacation also. फिर मेरे बच्चे अगर हो जाएंगे, then आपको उनको पढ़ाई भी करवानी पड़ेगी. Earlier, you know, like 5 to 10% of people's income used to go into education. I have 2 children. They both go to this. It's a fantastic school, but it's very expensive. अब ये realize हो गया लोगों को कि minimum 30 to 40% अपने बच्चों की education में डालना पड़ेगा. So, you know, people have not mathematically done that. So if you don't plan your life properly, forget about balance. You will not be able to cover up. आप सिर्फ EMI के पीछे भाग रहे हो. That's the reason why the current generation lives on credit cards. So I think the biggest advice that people need to get is not that they need to succeed in life. You first try and see if you can do one thing right. उसके बाद आप balance की बात करो. अब उस balance में क्या होता है, आप workout नहीं कर सकते, gym नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, पैसा नहीं खा सकते और सो भी सकते, सब कुछ नहीं होगा. So you have to understand what your priorities are at what age in life. So I've always only slept 5 hours a day. It's not a big deal for me. It's a very normal thing for me. I wake up at 5 a.m. every day for the last 20 years of my life. कोई बड़ी बात. ये मेरी normal life. So you know you have to be able to do that. For me, going to the gym is not like oh मेरे को gym जाना है. मैं normal है. You know मेरी normal work day सुबह 6 o'clock से रात के 9-10 बजे normal है. उसके बीच में बच्चों को भी देख लेना. It's a normal part of our life. अब लोगों को ये बड़ी लग जाती है तब अक्षय कुमार जो मैं मिलते हैं हम लोग नॉर्मली सुबह 5 बजे ही उठते हैं और 6 बजे हम लोग मिल जाते हैं. कोई बड़ी बात. जब अक्षय सर इंटरव्यू देने आते हैं सबसे पहले मेरे साथ ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं उनसे पहले उठता हूँ. You know so it's a normal thing in routine of life. So you have to understand this part कि कोई balance जो आप किताबों में पढ़ रहे हो all these self-help books are rubbish. I find them absolute rubbish. वो तो मैं भी किताब लिख लूँ ना. आज मेरे पास अगर इतने घर है बंगले ये सब है तो मैं लिखूंगा आप बोलोगे वाओ ऐसे बिल्कुल नहीं होता. You know and whenever you read all these amazing stories on Facebook कैसे लोगों ने 2 साल ऑफ ले लिया to travel the world क्योंकि बहुत ज्यादा काम हो गया था. तभी 2 साल के बाद उनसे मिलोगे आपको समझ में आएगा कि उनकी हालत क्या हो चुकी है. You know traveling the world is fine but you are not in a position right now in life to take off and retire at 35 unless you are a tech genius. मतलब आपने बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या you know टेक दुनिया में आप बहुत कोडर है whatever है. Otherwise you can't do that right or you have to stay single. Then it's okay. आप अकेले बैठे हो तो फिर तो कोई नहीं कुछ भी कर सकता. वो अलग है. Yeah, and I would also say कि लोगों को लगता है balanced life होती है. Balanced life is a rumor because हमेशा ups and downs चलते रहते हैं. तो एक लाइफ बैलेंस तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आपको नहीं पता कि कल आपके साथ क्या होने वाला है. बट आपको अपनी प्रायोरिटीज का ध्यान रखना है like you said and देखना है कि क्या important है. और obviously 35 में you cannot retire when you have everything on your back. Like जो भी Instagram, Facebook वगैरह पे लोग शो करते हैं कि they are traveling, they are having fun, they are living their life. आजकल बहुत चल रहा है. हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए. We should live our life. But ये जिंदगी जीने के लिए you should have that backup also, that financial backup also. Because money के बिना तो कुछ भी नहीं है ना. हम भी जिंदगी जी पाएंगे. And वो फिर उसके बाद that you said कि उनको 2 साल बाद देखो and how they are. It is true. Like उनकी कंडीशन खराब है. Real और real life में बहुत difference है. Like that balance in life isn't about achieving and maintaining a realistic perfection. It is about finding sustainable ways to manage everything you need to do with everything that you want to do to create a life that truly supports. So, moving on with today's theme for the episode, I would like to discuss that there's this thing with the youth of today कि हमने अपनी thinking capacity बहुत कम कर दी है. All we do is believe and rely on the internet for everything. But just imagine, जो information आपको online internet और social media पे मिल रही है, वो भी तो किसी की thinking ही है. हमारे उन पर इतना rely होने की वजह से हमने खुद का brain zero कर लिया है. So, Salil, what are your views on the same? What is always going to happen because artificial intelligence भी उस दुनिया या दौर में आ गए जहाँ पे लोग अपने आप को रिप्लेस करने के लिए रोबोट्स बना रहे हैं. गाड़ी अब कोई चलाना नहीं चाहता. टेस्ला ऑटो ड्राइव कार्स बना रही हैं. तो ये ऑलवेज एक सोच थी कि हम लोग को लगता था कि मैन और मशीन एक साथ रह सकते हैं. ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि मशीन हमसे कई ज्यादा सुपीरियर है और बेशक हम उसे बना लें बट एक समय ऐसा आएगा जब मशीन अपने लिए वापस सोचना पड़ेगा. हो रहा है और अब आम आदमी के लिए भी ऐसा हो. सो इट वाज नेवर गोइंग टू बी एन इक्वल बैटल. चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी हो. इट्स ऑलरेडी टेकन ओवर आवर लाइफ. सो
today your life partner has been replaced by social media, and that happened to a lot of people. Japan में अब people don't have marriages, मतलब their negative birth rate is there for the last 10-20 years. America में people are not having children, of course because of expenditure, it's very expensive, but also because today I've seen more single people than ever in their life. क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, अकेले पिक्चर देखने जा सकते हैं। अगर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए वेट करें 2 घंटा, आपने पिक्चर देख ली, नेटफ्लिक्स देख ली, कुछ भी खेल लिया. Technology is already taken over our lives, and it's a natural progression. You can't do anything about it. And yeah, we have to just live with it. You know, there's going to be no more superstars. आज शाहरुख खान, सलमान खान को कोई देखने नहीं जाता थिएटर्स में कहीं, because वो अकेले देख, 10 लोगों के साथ जाने की जरूरत नहीं है. तो वो कल्चर और बाहर एक साथ जाना वो है ही नहीं. फिर दूसरी बात, are you from Bombay? No, You're I'm from Bombay? Okay. Yeah. Wow, beautiful. तो वहाँ आपके पास तो बहुत easy है, माउंटेन्स भी है, बगीचे भी. ये आप बॉम्बे की जगह देखो, बॉम्बे में पार्क कैसे लोग देखते हैं, वाओ, एक पार्क दिख गया हमें. तो अब पार्क के चक्कर में स्कूल में अब इंडोर प्ले एरिया आ गया. तो क्या है, आप दोनों चीजें देख सकते हो. प्लान क्या था, बच्चे को भागना. हम भी भाग रहे थे बचपन में, बच्चे भी भाग रहे हैं, बट वो फील अलग थी. अगर हम बारिश में बाहर भाग रहे थे पहले, खुले आसमान के नीचे भाग रहे. अब क्या सिचुएशन हो गया कि जो रिक्वायरमेंट है 35 मिनट्स के अंदर बच्चे का करवा लिया, उसके बाद आपने उसके हार्ट रेट चेक कर लिया, आपने ये चेक कर लिया, वो चेक कर लिया, सब परफेक्ट, ओके. तो ये भी टेक्नोलॉजी हो गया ना. तो ये अब कुछ कर नहीं सकते, हम लोग ऐसे हो चुके हैं. और बॉम्बे में भी अब हरियाली दूर जा चुकी है, लेकिन ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है. जो बंबई में आता है वो छोड़ के जाता नहीं. आपने कभी ऐसे कुछ दोस्त मिले आपके जो बंबई छोड़ के उत्तराखंड आ रहे हैं? No. नहीं. सो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, बैंगलोर टू सर्टेन एक्सटेंट. अब ऐसे 3 जगह है जहां लोग काम करने जाते हैं, और जब लोग काम करने जाते हैं उनका मकसद एक होता है. उसमें आप अगर आप लकी हो गए, यू गेट लकी एंड यू आर एबल टू सेटल डाउन, यू आर एबल टू हैव अ फैमिली लाइफ देयर, टू मेनी थिंग्स आर फॉलन इन प्लेस फॉर यू. तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं. नॉर्मली इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. सो ये नेचुरल है, इट्स वेरी नॉर्मल. आज मैं आप उत्तराखंड में हूं, मैं बंबई में बैठा, हमें मिलने की भी जरूरत नहीं है, बट मुलाकातें हो रही है. मैं अपनी जिंदगी का एक शॉर्ट वर्जन आपको दे रहा हूँ. सो यू नो, this is also one of the good things with technology, but this is normal. Yeah, there's not much you can do about it. Yeah, and I would say कि technology is very beneficial. I would not say कि कार यूज ही नहीं है and हमें पूरा तरह से spoil कर रही है. आज हमें मेडिकल फील्ड, साइंस फील्ड में इतना सक्सेस मिला है और हम अलग अलग डिजीज के ट्रीटमेंट्स निकाल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. ये बहुत नेसेसरी है, बट द थिंग इज कि हमने टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है कि हम डेली लाइफ में भी अब खुद की थिंकिंग यूज नहीं करते. हम कुछ सोचते ही नहीं. हम जो भी रिलाय करते हैं, हम सीधा सोशल मीडिया और इंटरनेट पर रिलाय करते हैं कि हमें जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आंख बंद करके उसी पर रिलाय कर जाते हैं, बट हम खुद का ब्रेन यूज ही नहीं करते. पहले लाइक आज से हम 20 ईयर्स पहले देखें तो था कि बहुत अच्छे अच्छे पोएट्स थे, राइटर्स थे, बहुत अच्छा लिटरेचर इमर्ज था. बट आज देखें तो आज इन्फ्लुएंसर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं एंड दे आर गेटिंग मोस्ट ऑफ द व्यूज एंड लाइक जस्ट बाय डूइंग सम लेम स्टफ, लाइक मोस्ट ऑफ देम. बट जो एक्चुअल टैलेंट है वो इन्हीं चीज पर घूम गया है, क्योंकि हम अपना ब्रेन यूज नहीं कर रहे. आजकल हम बस अपना फन के लिए देख रहे हैं. हमने अपनी थिंकिंग बिल्कुल छोड़ दी है. अभी व्हाट्सएप पे कोई फेक न्यूज आ जाती है तो हम 2 मिनट में बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी थिंकिंग कैपेसिटी बिल्कुल जीरो कर दिया, नील कर दिया बिल्कुल भी. आई वुड से लाइक थिंकिंग इज स्किल्ड वर्क. इट इज नॉट ट्रू दैट वी आर naturally endowed with the ability to think clearly and logically without learning or without practicing. We cannot think. और हमारी ये आदत में नहीं रहा है. प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल ही नहीं रहा है हमारी आदत में, क्योंकि हम थिंक करते ही नहीं है. What we do is we just overthink, and वो भी अलग पार्ट्स में. बट अगर हम किसी टॉपिक पे सोचें, आजकल एक हेल्दी डिस्कशन नहीं होता ना हमारे फैमिलीज में, जब डाइनिंग टेबल पे होता है या आसपास फ्रेंड्स के बीच में भी एक हेल्दी डिस्कशन कुछ अच्छे टॉपिक्स पे नहीं होता. और we do is कि साथ में बैठे हैं तो भी मोबाइल ही यूज कर रहे हैं. आई वुड से कि हम ह्यूमंस इसी वजह से तो डिफरेंट है, बिकॉज our system was made in such a way that we can critically think and analyze situations. तभी तो हमने जीरो से civilization स्टार्ट करी और आज हम यहाँ हैं. बट आज जो चीज हर इंसान को जरूरत है on this planet, that is to think with critical objectivity. So Yeah, you're right. What would you like to say on this? You said a lot of things in that. It doesn't really, you see, I don't think of it like that also, because after a point of time when लोगों की critical thinking और जो उनकी thinking है, earlier when the poets were, they don't have access to them. Now you have access to Einstein ने क्या बोला, you have access to Mozart, William Shakespeare on the internet. So मैं इससे agree नहीं करता कि इससे thinking नहीं हो पा रही है. ये तरीका चाहिए. आज भी किताब Kindle पर भी पढ़ी जा सकती है और हाथ में भी पढ़ी जा सकती है. It's the same. Doesn't really matter. As much knowledge can be imparted. It's up to you who you want to follow. There are lots of creators there that are very popular that don't make the greatest content according to some people. And there are lots of creators out there that do make great content. So choice has increased a lot. That's one of the biggest things that has made a very powerful tool for every human being. The choice to watch cricket. That's why cricket is making 50,000 crores on the media rights. क्योंकि power है आपके पास कि किसको देखना है. Power है कौन से सिनेमा को देखना है. Power है कौन सी किताब को पढ़ना है. Power है कौन से ऑफिस में जाना है. So I think that is always going to be the case with evolving time. आपकी choices बढ़ती रहेंगी. आपकी ease of doing business, ease of doing things बढ़ती रहेगी. So that's the other way of looking at it. So it's just that जो आप सोच रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो शायद वैसे ना हो, लेकिन होते रहे. Yeah, as we said कि every coin has two sides. So
I would also say that just a general thing to all of the youth of today, that don't waste your time on the internet. Let your creativity enhance. As you said, do follow good accounts. ऐसा नहीं है कि social media पे बुरी चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं, तो it's on you कि what you follow and what you spend time on. जितना टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में यूजफुल है, उतनी हमारे ब्रेन को थोड़ा सा वेस्ट कर रही है. बिकॉज इवन फॉर द सिंपलेस्ट टास्क हमें आदत हो गई है सर्च इंजन्स को यूज करने की. वी डोंट इवन ट्राई टू कम अप विद सॉल्यूशंस एनीमोर बाय आवर ओन सेल्व्स. एम आई राइट? Yes. But it's okay. Like I said, ना बचपन में कैलकुलेटर यूज करते थे, आज आपके सर्च इंजन है. So it's fine. There's no problem with that. I work with too many youngsters. I have so many people that work for me, work with me. It's fine. It's how you move ahead and you need to use all this. पहले आपको गियर चेंज करना होता है गाड़ी को आगे चलाने के लिए, अब ऑटोमेटिक में चलती गाड़ी आ गई. So it's don't get stuck into this zone. This is for you. There is technology is not something bad for you. There's a lot of things that you can do which make it easier. And when you're using it in practical life, it becomes a lot easier and faster. Now I can do 100,000 more things because everything is much faster for us. It doesn't take so much time to do things. That's why. I totally agree with you. So, Sahil, you are in the RJ profession for more than 25 years now. So, how did you choose acting as your career? What was your journey towards acting? You did various movies in Bollywood. No, I mean, there was no choosing. I just went एक चीज के बाद एक चीज होती चली गई. And like I said, those are the days where it was all very different. चाहे वो television people would be, I was one of the first television actors to do film. और ऐसे होते रहता है यार. You give auditions, things happen, things do well. रोल के लिए मुझे स्टारकास्ट में नॉमिनेट किया गया था. उसके बाद से ज्यादा काम नहीं मिला. जो 5 मिनट का रोल आशिकी 2 में किया, उससे 1000 काम मिल गए. तो you never know कि क्या क्या चलता है और फर्क नहीं पड़ता है. अगर ऐसे आप लिखना शुरू करोगे तो मेरे करियर में मैं इतना कर चुका जो लोग 2 लाइफ टाइम में ना कर सकते. But that's not how you look at things, you know. So I do radio simultaneously with B4U. I do simultaneously with performances. जब मैं 3N की शूटिंग कर रहा था, 26 दिन के लिए मैं नाइट शूट कर रहा था, दिन में मेरा नॉर्मल काम चल रहा था. 28 डेज के लिए I was just shooting a film, a Bollywood film, plus radio, plus shooting for my other things, plus running a company. लोग इसको बड़ा बना देते हैं. For me, it's not a big deal. All these things, it's just normal. You just keep doing it. और I don't consider this work. This is made me very successful, made me very happy. मेरे को एक मौका दिया है to be able to live the life I want to live. But ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है. It was always there. ये schooling से मेरा आया था and I was always there. I was doing all this in my school also. It's just that later on people started paying me for it. बस ये फंडा है, you know. So it depends on how your schooling is. आपकी formative years कैसी है, फिर उसके बाद आपका professional life ऐसे start हो जाता है. That was nice. So, how was your experience today on the show? Make a change. Let's strive to more unashamed conversations. You know, it's differences of thought always, which is great. I'm very lucky that in my profession I work with 18-year-olds, I work with 25-year-olds, I work with 60-year-olds and 70-year-olds. Very rarely do people get the opportunity, you know. I'm in my mid-40s now, you know, and I have to constantly react and be in tune with differences of thought. कोई भी, चाहे older हो, चाहे वो younger हो. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये जो इन्फॉर्मेशन करता हूँ, लोगों की थिंकिंग बड़ी अलग रहती है. यू नो, पीपल आर मोर अश्योर्ड, हैव ग्रेटर नॉलेज, दे हैव ग्रेटर आइडियाज, यस एंड नो. मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं. व्हेन वी वर यंगर देयर वर नॉट दैट मेनी ऑप्शंस. अगर आपको दूध पीना है तो आपको बॉर्नविटा ही पीना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. आज कॉफी के ही एक नेस्कैफे गोल्ड में ही 10 वर्जन है. So this is an amazing change that has happened in the world, and I love that, you know, and that's why I like to stay in touch with everybody. That's why when you reached out to me on Gmail, this is how I used to reach out to people also. I've reached out to Mr. Bachchan like this. I used to just message people. ठीक है, एक बार जब ब्लू टिक आया Instagram पर तो easy हो जाता था. मेरा पूरा Spotify का ऑस्ट्रिप चले ऐसे ही हुआ. नैस डेली से लेकर सदगुरु से लेकर शीशी रविशंकर सब Instagram से I've reached out to them. So I feel this is a great way to sort of have information that goes all over. अलग अलग thought process रहती है लोगों की. People don't have to agree, which is another great important thing in life where you must learn to coexist with people who don't necessarily agree with what you think. But ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करती. सोच अलग है, हमारी सोच अलग है. मतलब ये नहीं कि हम coexist नहीं कर सकते. So that's why I think what you're doing is a good job with that. You know, different thought processes, bringing different people together. I think it's great. Thank you so much. Like, I would also say कि सबका different thought process होता है, and that's how a discussion takes place. And this is also got a healthy conversation. So yeah, that was amazing. So would you like to say something to the audience that is listening to you right now? Just follow what you feel like you're doing, and you must understand that most of the time you'll fail. But it's like sport. क्या होता है ना कि 5 innings क्रिकेट में अगर आप 0 to 10 पे आउट हो रहे हो, एक दिन ऐसा आता है जब आपके बैट से बड़ी अच्छी बॉल जा रही है, उस दिन पर आपको 200 रन मारने पड़ेंगे ताकि आपका एवरेज अच्छा हो जाए. आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले उस समय यू आर एबल टू कैपिटलाइज ऑन इट. एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी अ संडे, लेकिन जिस दिन संडे हो ना, आपको 24 आवर का संडे बनाना चाहिए. दिस इज व्हाट आई टेल पीपल. अपॉर्चुनिटीज एंड इवन फॉर्म कम्स एंड गोस. व्हेन इट कम्स, मस्ट निचोड़ो इट आउट एज मच एज यू कैन ताकि आपके बैड टाइम्स में ये लक चल जाए. फिर ये जो आपका जो प्लस पॉइंट हुआ यहाँ पे, यू कैन यूज इट ओवर देयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So true. Thank you so much, Salil, for being here today. Thank you, Aishwarya. Listening about your journey and talking about such an insightful topic. It was amazing. All right. Thank you.